लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ट्रांजिशन का बात कर रहे थे ना. Exactly. So today we have discussed magnetic multiple transition. Now I'll make on table that is very important for your exam. सर Yes. तो मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था सर, तो कैन यू जस्ट रिपीट Yes. So yesterday that electric multiple transition, that parity of gamma photon was defined like -1 to the power L. Okay, then we have seen if L equals to even, then this, if L equals to odd, then pi gamma was odd parity, right? So for electric transition, if there is a change in parity between initial and final state, then you will get odd electric transition. But for magnetic transition, if L equals to odd, then pi gamma will obviously become even, because -1 to the power L plus 1. If L equals to odd, this factor will be even. So -1 to the power even means it will be even or plus 1. So what does it mean? So parity is conserved, right? So initial state parity should be equals to pi f into pi gamma. Parity is multiplicative in nature. So if pi gamma is even, obviously pi f equals to pi I. Pi I equals to pi f. What does it mean? If there is no change in initial and final state parity, or there is no change in the sign between initial and final state parity, then you will get magnetic multiple transition corresponding to L equals to odd. So you will get M1, M3, M5, so on. And if L equals to even, then there is a change in parity. So if there is a change in parity between initial and final state, then you will get M2, M4, M6, and so on. So I'll summarize it in table, then it will be clear to all. Okay. So let me summarize it. Sir. Yes. Sir, pi equal to pi r equal to +1 को हम E1 क्यों बोल रहे हैं? मतलब pi gamma, parity of gamma photon. pi gamma equal to +1 को E1 क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमने L equal to odd में pi gamma E1 लिखा. हाँ, even इसलिए है ना, प्लस 1 आ जाएगा ना. ये देखो L का वैल्यू कोई भी ऑड चूज करो, सपोज मान लो 1 है, 1 एक ऑड नंबर, so -1 की पावर 1 + 1 means 2, right? So -1 की पावर 2 means +1, so it is even. मतलब पॉजिटिव को इवन बोलते हैं. इवन है नंबर नहीं है. पॉजिटिव मतलब इवन, नेगेटिव मतलब ऑड. ओके, पॉजिटिव नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट साइन. इट क्लियर नाउ? सर पाई एल इक्वल टू पाई, जो राइट में जो ऊपर लिखा है पाई गामा के बगल में, व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? ये वाला? यस सर. हाँ, सो सपोज यू हैव इनिशियली, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको. सपोज मान लो आपका इनिशियली न्यूक्लियस इज एट एक्साइटेड स्टेट. सो लेट अस एज्यूम दिस इज योर initial state or excited state. Its spin is Ji, its parity is pi I. Okay, so now it is making transition to a ground state or final state. Its spin is Jf and parity is pi f. So please note that when I am writing that spin of nucleus, it means it is total angular momentum. Okay, and when it is making transition to ground state, it will emit on photon. So it will have some energy, and let us assume its parity is pi gamma. So parity is conserved in this reaction. So parity is multiplicative in nature. So what does it mean? So initial parity should be equals to the parity of product. So here product is photon and final state, right? So what we can write from parity conservation? Since parity is multiplicative in nature, so initial state parity is pi I and final state is pi f into pi gamma. Is it clear now? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I'll make table. Shall I erase this part? Yes, sir. Okay. सर ये मल्टीपल ट्रांजिशन को और एक बार सर बता देंगे, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, कैसे होता है? मल्टीपल ट्रांजिशन मतलब जब आपका फोटो गामा एमिट हो रहा है ना, तो गामा एमिट हो रहा है तो यहाँ पे डाइपोल ट्रांजिशन हो रहा है ना, क्वाड्रोपोल ट्रांजिशन हो रहा है. एक्चुअली मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. गामा रे कैसे एमिट होता है. गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज ऑसिलेट करता है ना. If charge is moving in a constant speed or velocity, it will never create electromagnetic wave. It will create some magnetic field or magnetostatics. But when charge start oscillation, it will create electromagnetic wave. So in this case, what is happening actually inside nucleus? You have proton and neutron, right? So you have proton and neutron, and proton and neutron is continuously changing with time.
Proton and neutron is continuously changing with time, right? Proton is changing to neutron by the emission of pi plus. Neutron is changing to proton by emission of pi minus, right? So there is a continuous change in the charge or time varying charge inside nucleus. Is it clear what I'm saying? Yes, sir. There is time varying charge inside the nucleus, and for any time varying charge you can express in terms of multiple dipole, quadrupole, okay, octapole, so on. So now what is happening, that pole is every pole is oscillating. So let us assume you have dipole. So dipole is you have two charges, plus and minus. That polarity is changing, and when that polarity is changing or oscillating, so dipole oscillation will give you some electromagnetic wave. Similarly, quadrupole oscillation will give some electromagnetic wave. So E1, what I am writing, that is dipole transition. Okay, so time varying dipole, electric dipole is giving actually electromagnetic wave or gamma ray. Similarly, there is a magnetic cause also. So when you have that proton and neutron, it's orbiting, right? It's moving in orbit, right? Yes. So it is creating some current, right? Proton is moving, so it will create some current, and also it has spin, it has some current, right? Neutron is moving, it will not contribute any current, but it has spin that will contribute some current. Now let us assume that neutron is converting to proton, so there will be change in current, right? No, because proton has orbital current as well as spin current. Now if a neutron is changing to proton, there will be change in change in current. So there will be time varying current inside that nucleus. So that will create time varying magnetic field, and the time varying magnetic field will create time varying electric field, and these two together with will create electromagnetic wave. So there is an electric cause of gamma radiation as well as magnetic cause. Okay, so fortunately both are present for gamma decay. So what I'm writing, when I'm writing that E1 means the dipole is contributing for gamma radiation. When I'm writing E2 means quadrupole is contributing to gamma radiation. When I'm writing M1 means magnetic dipole is contributing for gamma radiation. M2 means magnetic quadrupole is contributing for gamma radiation. Is it clear now? Yes. Sir, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो सर जीरो होता है न्यूक्लियस के लिए. हाँ, अगर स्फेयर है तो जीरो होगा, है ना? अगर स्फेयर नहीं है फिर जीरो ना. यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन जनरल जीरो होता है. क्वाड्रुपल तो स्फीयर के लिए जीरो होता है, बट डाइपोल तो हाँ, यस, डाइपोल जीरो होता है, यस, बट क्वाड्रुपोल अदर टर्म रहेगा. बट यहाँ पे डाइपोल को भी कंसीडर कर रहा है ना? मैं एक बार चेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा डाइपोल को भी ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसीलिए इसको कंसीडर कर रहा है, मतलब मैकेनिज्म में जैसे आपका चार्ज तो चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, उसीलिए शायद इसको कंसीडर कर रहा है. बट मैं एक बार चेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दे आर कंसीडरिंग दैट डाइपोल आल्सो. सर ये डाइपोल क्वाड्रुपोल सर, दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर टाइम, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये तो एग्जिस्ट करता होगा. डाइपोल, हाँ, यस, एक्चुअली एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, दैट यू हैव लर्न इन क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है? कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को आप यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, ओके, एंड दैट इफ द चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम, if charge is changing with time, then that pole will also oscillate or it will vary with time. Okay, now let us assume you have dipole. So if dipole is oscillating dipole will create some electromagnetic radiation, that is actually gamma ray for nucleus. Similarly, quadrupole, if quadrupole is oscillating, it will create some electromagnetic radiation, and for nucleus it is gamma ray. Similarly, there is magnetic cause also. हाँ, ये चीज मतलब आई अंडरस्टैंड, बट मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन, नो सॉरी न्यूट्रॉन. तो ये जो भी फॉर्मेशन हो रहा है डाइपोल या क्वाड्रुपोल का, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए तो होता होगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं, ऑसिलेट हो रहा है एक्चुअली, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है एक्चुअली, है ना? कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है? ओके सर, ओके सर.
Okay, now let me summarize the table. So type of transition. Type of transition. Then you have symbol. Then you have L value, parity change. Parity change means if there is a change in sign between initial and final state parity, that is parity change. So let us define that symbol delta phi. So first is electric dipole. Electric dipole symbol is ion. Then you have magnetic dipole. Dipole, its symbol is M1. Then electric quadrupole. Sign is E2. Magnetic quadrupole. Okay, sign is symbol is M2. Then electric octapole. Electric octapole. This is E3. Then magnetic octapole. Sign is symbol is M3. Okay. So this is and then there are so many poles right here. So here L value is how much? L is on here. L is on here. For E2, L is 2. For M2, L is 2. E3, L is 3. For M3, L is 3. Okay. Now what about parity? For ion, will there be any change in parity? Yes, sir. Yes, because you see, for this L minus 1 to the power L, when I am writing electric transition, so for gamma photon, it will be minus 1 to the power L. If L is on, obviously pi gamma will be minus 1. So there will be change in the sign between initial state parity of nucleus and final state parity of nucleus. Or you can say pi I equals to minus pi A. So for ion, there will be change in parity. Yes. Okay. Y means yes. For magnetic, minus 1 to the power L plus 1. And L is how much? 1. One. So it's giving even. So there will be no change in parity. Okay. Obviously for E2, there will be no change because minus 1 to the power 2. Because E came here. So minus 1 to the power L. L is 2. So there will be no change in parity. For M2, there will be change in parity. For E3, again, there will be change in parity. And for M3, there will be no change in parity. Is it clear? Yes, Yes. sir. Now let us Yes. assume there is a transition 2 plus 2, 0 plus. Can you tell me which type of transition you will get? So here L will be how much? Sir, 2. Very good. So L is 2, there is no change in parity. L is 2. Electric multi. L is 2, there is no change in parity. Okay. So this is E2, right? E2, right? So this is electric quadrupole, right? Yes. Now let us assume another example 5 by 2 plus 2, 3 by 2 plus. So L will be how much? 1, 2, 3, 4. Right? Is it clear how I am writing that L? Because we know L is from mod Ji minus Jf to mod Ji plus Jf. Right? So if you take in this range, so Ji minus Jf means how much?
5 minus 3, 2 divided by 2, that will give you 1, and ji plus jf means 5 plus 3 divided by 2, so 8 by 2, it will be 4. So you'll get in this range 1, 2, 3, 4. Okay, now you see there is no change in sign, right? So L equals to 1 will give what? L equals to 1 will give what? Change. Huh? Magnetic. Magnetic, exactly. See, L equals to 1 and there is no change in parity, right? So this one, because there is no change in parity and L equals to 1. So obviously M equals to, this will be M1. Then L equals to 2 and there is no change in parity. It means E2, right? Electric. Then M3, then E4, right? Is it clear? So among this will be the strongest, because if you increase that L, the intensity will get decreased. So among this, all are allowed, but this will be the strongest. Now I'll give another example. 3 minus 2, 2 plus. 3 minus 2, 2 plus. सर E4 वीकेस्ट होगा इसमें. हाँ, E4 weakest होगा. सर ये जज कैसे कर रहे हैं कि M1 will be the strongest and हाँ, ये L के ऊपर डिपेंड करेगा. मैं लिख रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना. अगर कोई आप पोल का देख रहे हो, लेट अस अज्यूम आप मैग्नेटिक पोल का देख रहे हो, मैग्नेटिक पोल L+1 का और L का अगर देखोगे तो इसका इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है -10⁻⁵. सिमिलरली EL+1 और EL का देखोगे तो 10⁻⁵ में होता है ना. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इसमें जाओगे ना, एक बढ़ा के जाओगे तो फिर आपका इंटेंसिटी बहुत रैपिडली ये होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है. इसलिए M1 इसीलिए M1, जैसे जैसे L बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी विल गेट डिक्रीज. जनरली भी लिख सकते हो L+1 का जो ये है और L का, इनका जो रेशियो है इंटेंसिटी का, ये 10⁻⁵ होता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी लास्ट वन? Yes, sir. E1, M2, E5. E3, M4, E5. M2, E3, M4, E5. Good. So 3 minus 2, 2 plus. Okay. So it means L will be how much? 1, 2, 3, 4, 5. There is a change in parity. So L equals to 1 will give obviously E1, right? Then M2, then E3. एक अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर इजीली सब कर सकते हो, है ना. जस्ट ऑल्टरनेट होता है. देन आपका क्या हो जाएगा? M4, देन E5. इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? ये वाला. E1. ओके. सो नाउ विल डिस्कस. ओके, वन होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करना इसको. 1/2 माइनस से 1/2 प्लस, इसको करना. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क. तो M0 तो एड्रेस करेगा नहीं ना सर? नहीं, L0 नहीं होता है. आप करके बता, देखा ना मेरे को, है ना. ठीक है. नाउ विल डिस्कस बीटा डीके. So let us assume your cesium so cesium 55 on 37. So before discovery of neutrino, the beta decay, that pattern of beta decay, or scientists used to think this kind of process. 56 on 37, then you have beta minus or minus on 0. So in that process, basically what is happening? On neutron is converting to proton plus, right? So this is a form of
beta decay. Okay. So this was initially nuclear scientists used to think that beta decay process is like that. Okay. So what was the observation? What was the experimental observation? So first, so this is along y-axis number of beta particle count, basically number of beta particle, okay, per unit time, and this is energy of or kinetic energy of emitted beta particle. So this is the experimental pattern. So the maximum energy of emitted beta particle or maximum kinetic energy was observed to be around 1 mega electron volt, and the maximum emitted particle has kinetic energy is Emax by 3. So beta particle, that spectrum of beta particles, so number of beta particle emitted per unit time versus kinetic energy of emitted beta particle, this kind of experimental plot they have observed. So there is this is a continuous spectrum, right? So first observation is experiment that energy spectrum plot. Yes, sir. Is along y-axis आपका number of particle beta particle emitted per unit time, okay, or per minute, okay, per 1 मिनट में कितना number of beta particle emit हो रहा है वो count हो रहा है. और साइड energy जो emitted particle है उसका energy, they are measuring that energy by using magnetic spectrometer. Okay, so what they are observing that emitted beta particle has continuous energy. I mean number of, you see, for all number of particle you will have many number of energy, right? So energy spectrum is continuous. I mean for this energy you will get beta particle, for every energy you will get that beta particle. So beta particles can contains all energy up to 0 to Emax. So energy spectrum is continuous. Okay, sir. Huh? It's continuous. Okay. The Second Emax equals to what you have written, sir? 1 mega electron volt. Okay, sir. Okay. Second observation is linear momentum is not conserved. So if so this particle is at rest. So if this particle is at rest, so for any nuclear reaction, the linear momentum is conserved. Okay. So what does it mean? That suppose this is your daughter nuclei and this is your beta particle. Okay. So they should move in opposite direction, right? Because PD daughter इसका जो ये है daughter nuclear का जो linear momentum plus beta particle का linear momentum, that should be equal to 0. Or you can say that let us assume that mass of a daughter nuclei is md and its speed is vd or velocity is vd, should be plus the energy mass of beta particle is m beta and its speed is v beta, that should be equal to 0. It means md vd should be equals to minus m beta v beta, right? So they should have similar same magnitude of momentum, linear momentum, but opposite sign. So they should move in opposite direction, but experimentally it was not like that. Okay, so linear momentum is not conserved. Okay, third observation is angular momentum is not conserved. Sir, Yes.
What we write that equation alpha? This equation. Yes, sir. So suppose you see that linear momentum is conserved. So parent nucleus is at rest. So its linear momentum is 0. And product nucleus is daughter nucleus plus beta particle, right? So linear momentum conserved means 0. That parent nucleus linear momentum is 0. So that it means 0 should be equals to the sum of the linear momentum of daughter and beta particle. So PD means linear momentum of daughter particle. Okay, daughter was barium, right? And P beta means the linear momentum of beta particle, emitted beta particle. So what does mean? PD means MdVd. Md is the mass of daughter nucleus, Vd is velocity, plus m beta means mass of beta particle, and v beta means its velocity. Okay, so they should have, if you rearrange it, MdVd equals to minus m beta v beta. So that it means they should have same magnitude of linear momentum but opposite in sign. So also you can, from this equation you can say that they should emit in opposite direction, but experimentally it was not like that. Okay, they are not emitted in opposite direction. Okay, so if that decay process or the nuclear reaction is true, then they should emit in opposite direction. So there should be something wrong there. Then angular momentum conservation. Angular momentum was not conserved. Okay, so angular momentum not conserved. Why? So if you see that process, actually in beta minus, neutron was converting to proton plus electron, right? So its spin is how much? Half. For proton it is half, for electron it is half. So if you combine this, so what you will get? 1 plus 1, that will be 0. Sorry, 1 plus 1 is 1, then 1 minus 1 is 0. So that reactant has angular momentum half h cross, but product is giving 1 h cross and 0 h cross. So it's not matching with that left part, right? So this, it means angular momentum is not conserved here. Okay, so there is some problem in this decay process. Then that Pauli gave that neutrino hypothesis, and he said, is it clear? Is it Sir, clear? this last part, what can you just repeat? Last part. So Yes, sir. actually in beta, if you see that cesium 55 137 decay to barium 56 137 plus beta, right? Electron minus. So what is happening here? One neutron is converting to one proton, right? And with addition of electron. So this is the kind of process. Neutron is converting to proton plus electron, and you know spin of neutron is half. For proton it is half, and for electron, for all that spin of half is half. But how will add this? This is vector sum, right? So vector sum, how you used to do? L1 plus L2 or J1 plus J mod of J1 plus J2 to mod of J1 minus J2. So if you add these two, it will give you 1. If you subtract it, it will give you 0. So product angular momentum, the angular momentum of product is either 1 or 0, and it is not matching with that initial angular momentum. So it means there is some problem with this reaction. Is it clear now? Yes, sir. So later Pauli gave that neutrino hypothesis. सर Yes. सर जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है Yes. इसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट टाइम टू एनर्जी का ग्राफ था. हाँ, yes. सर वो किस तरीके से अपोज कर रहा है इस बीटा डीके को? Exactly. It's a very good question. Actually, they are measuring. Suppose you have, I'm giving an example. So suppose you have neutron or parent nuclei. Let us assume this is your parent nuclei. It's converting to daughter nuclei, and you have beta minus, right? So this is your situation. So when we'll calculate that Q value, right? Q value when we'll calculate. Now you see what is actually Q value. Q value means the energy released in this process, right? The energy released in this process. Okay. So if the energy released in this process, that energy will be contributed by this fellow and by this fellow, right? Whatever Q value will be
the energy release that will be shared by this and by this. Okay, but maximum kinetic energy will be carried by this particle. Okay, now maximum energy will be carried by this particle means suppose this energy is 4.2 or something you are taking. So 4.2 MeV. So 4 MeV will be carried by this, and only 0.1 MeV will be carried by this. So what does it mean? So if you calculate Q value, so Q value will be, I'll derive it. If you calculate Q value, so it will be basically the difference between mass of atomic mass of parent minus atomic mass of ZA plus 1 C square, and that should be equals to that maximum kinetic energy of beta particle. So if this process is true, then spectrum should not be like this. I mean, maximum number of beta particle will have maximum energy. Did you get what I'm saying? ये जो आप Q वैल्यू से ये जो आपका एनर्जी मिल रहा है ना Emax, सो Emax मतलब जो Q वैल्यू है Q वैल्यू के बराबर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बीटा पार्टिकल होगा उसका एनर्जी कितना होगा Emax होगा, बट वहां पे क्या दिखाया जा रहा है कि Emax में बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहा है. इज इट क्लियर? Yes sir, yes sir. हाँ, मतलब also the magnitude is very low sir. हाँ, magnitude is very less, but if for any nuclear reaction, if this particle is so small, then it will carry maximum energy. So maximum, the number of particle will have Emax energy, but it was not that spectrum was not showing like that. Spectrum is showing that maximum number of particle has energy Emax by 3. Okay. So later, Pauli gave that hypothesis of neutrino. Okay. So what Pauli said, hypothesis of neutrino. He said not only that beta particle is emitting, there is some emission of a particle, another particle. So that particle is basically neutrino. So he said not only 2 particles are emitting there is emission of 3 particles. Okay, and the third particle he gave that name neutrino. Okay, and he said that spin of neutrino is half. Okay, then rest mass is 0 equals to 0, then charge is 0. Okay, and also he said for neutrino its antiparticle is anti-neutrino. Okay, it had same spin. Okay, the spin is half, rest mass is 0, and charge is 0. Okay, so they have same properties. Okay, neutrino and anti-neutrino. What is the difference? So इनका property same होता है, एक difference होता है, वो कौन सा है? सर हेलिसिटी. Good. पार्टिकल एंड एंटीपार्टिकल. पार्टिकल एंटीपार्टिकल दोनों के ही बोल रहा हूँ ना, देखो सेम है, दोनों का हेलिसिटी डिफरेंट होता है. जो आपका न्यूट्रिनो है इसका हेलिसिटी क्या होता है? -1 होता है, राइट? यस सर. फॉर एंटी न्यूट्रिनो इट इज +1, है ना. ये पार्टिकल फिजिक्स में मैंने ये बोला था ना हेलिसिटी, कैसे न्यूट्रिनो का आपका -1 होता है, एंटी न्यूट्रिनो का +1 होता है. ओके, ठीक है. तो नाउ एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व नाउ. यू सी, shall I erase? Yes, sir.
सर दोनों का स्पिन अपोजिट होता है ना, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। नो नो नो, सेम होता है। पार्टिकल, अपने पार्टिकल फिजिक्स क्लास किए हो? यस सर, करा था। पार्टिकल फिजिक्स क्लास किए थे आप? यस सर। तो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे स्टूडेंट का मिस्टेक होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का स्पिन को लेके। स्पिन सेम होता है पार्टिकल एंटी पार्टिकल का। सर इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों का डिफरेंस क्या है? चार्ज का डिफरेंस है आपका, है ना। फिर आपका और क्या डिफरेंस है बताओ? चार्ज तो सेम ही है ना, अभी लिखा नहीं, ये तो न्यूट्रल है वैसे, इसीलिए अगर आपका दोनों पार्टिकल चार्ज है तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जो ये है वो डिफरेंट होता है ना। क्वांटम नंबर पे तो हाँ, क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाता है, जैसे I3 है वो डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रेंजनेस है वो डिफरेंट हो जाता है ना। ओके सर। ठीक है ना, क्वांटम गुड। इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर सारे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, बट स्पिन सेम होता है। ठीक है, भूल गए लग रहा है आप लोग पार्टिकल फिजिक्स। चलो नेक्स्ट क्या है, अब ना एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो फर्स्ट क्या था, एनर्जी स्पेक्ट्रम, इस तरह से था आपका। तो यहाँ पे जो इमैक्स है, जो बीटा पार्टिकल है, तो यहाँ पे न्यूट्रिनो जो इमिट हो रहा है उसका एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिनो का कुछ एनर्जी होगा, है ना। जैसे जैसे इधर आओगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूट्रिनो का कुछ एनर्जी होगा, कुछ बीटा पार्टिकल होगा, यहाँ पे कुछ होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, न्यूट्रिनो का जो एनर्जी है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिनो का जो इमिटेड न्यूट्रिनो का एनर्जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बीटा पार्टिकल भी एनर्जी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका इस तरह की कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। सर ग्राफ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिनो का तो एनर्जी मिड पॉइंट पे ज्यादा होगा ना? नहीं, यहाँ पे देखो, एक्चुअली टोटल एनर्जी तो आपका ऑन है में भी ना। अब देखो यहाँ पे आपका बीटा पार्टिकल का एनर्जी क्या है, तो अगर ऐसा लिख सकते हो, बीटा पार्टिकल का एनर्जी जो है और आपका अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये ऑन एमईवी के अराउंड होगा, है ना, सपोज। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, बीटा पार्टिकल का एनर्जी मैक्सिमम है ना। ए जो वाई एक्स एक्सिस वो आपका एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है बीटा पार्टिकल का, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नाउ इज इट क्लियर? सर हाँ, हमारा जो प्रॉब्लम था कि पिछले ग्राफ में कि बीच में हमें मैक्सिमम, तो इसमें ये मिल रहा है ना, मतलब मैक्सिमम में लास्ट टाइम जो ग्राफ था उसमें। हाँ, बीच में, हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल मिल रहा था। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसका जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहा था, जिसका एनर्जी कितना था, Emax बाई 3। सपोज मान लो 10 पार्टिकल इमिट हो रहा था, सपोज मान लो अगर 10 बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो 8 का जो एनर्जी होगा वो आपका कितना होगा, Emax बाई 3, यानी ये कितना है 1/3, तो 0.33 MeV का एनर्जी बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो 10 अगर इमिट हो रहा है तो 10 में से 8 पार्टिकल का जो एनर्जी है वो 0.33 MeV है। सर लेकिन ये हमें पिछले ग्राफ से मिल रहा था ना, वहाँ अभी अपनी नहीं, बोला था कि वहाँ प्रॉब्लम ये था कि यहाँ Emax मिलना चाहिए प्रॉब्लम था। नहीं था, वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, बट जो आपका जो रिएक्शन है वो इस ग्राफ को क्या नहीं, ये नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम यहाँ पे काउंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट काउंट कहाँ पे मिल रहा है आपको, मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इज इट क्लियर? यही क्वेश्चन था ना आपका? हाँ सर यही था। हाँ, तो ग्राफ तो यही मिल रहा था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, है ना, बट इस ग्राफ को जो रिएक्शन है उसमें कमी था, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल शुड बी समवेयर हियर, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके, देन एक्सपेरिमेंटली ये भी दिखा जा रहा था कि जो बीटा पार्टिकल है वो, सॉरी, जो लीनियर मोमेंटम है दे आर नॉट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं हो रहा था, है ये ना। भी कंटीन्यूअस कर भी होगा। हाँ, कार्ड तो ये कंटिन्यूअस ही है, बट इस कार्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब तक न्यूट्रिनो का डिस्कवरी ना हुआ तब तक ये क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपका ये जब न्यूट्रिनो का डिस्कवरी हुआ तो ये ग्राफ आपका एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। सेकंड क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम। देखो
ठीक है, आपका न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। यहाँ पे देखो इसका कितना आता है, हाफ है, इसका क्या है, हाफ है, हाफ है। न्यूट्रिनो का कितना होता है, एंटी न्यूट्रिनो का हाफ। गुड, हाफ। इसका कॉम्बिनेशन क्या देगा, 0 ऑन, अभी देखा था है ना। अब 0 ऑन, 0 के साथ इसको ऐड करो तो कितना मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा, राइट। वेक्टर सम करोगे तो हाफ मिलेगा। ऑन के साथ वेक्टर, ऑन के साथ हाफ का वेक्टर सम करोगे तो क्या मिल सकता है, आइदर ऑन प्लस हाफ दैट विल बी 3/2 और ऑन माइनस हाफ दैट विल बी हाफ। So basically you will get 1/2 and 3/2, right? So this 1/2 is matching with this. So it means angular momentum is conserved. Okay. Is it clear now? लेकिन सर अगर 3/2 आया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व पार्टिकल फिजिक्स आपने क्लास किए हो, नहीं नहीं सर, नहीं किए, उस टाइम नहीं मैट्रिसेस चल रहा था। नहीं, एक्चुअली अगर सपोज मान लो मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, इनमें से कोई एक अगर इनके साथ मैच कर रहे हैं ना तो वो अलाउड है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। 1/2 के साथ ये मैच हो रहा है ना, अगर आपको सब मान लो 5 वैल्यूज है, इनमें से 5 में से अगर एक भी इसके साथ मैच कर रहे हैं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। ओके, चल आई प्रोसीड नाउ। यस सर। ओके, नाउ देयर आर, Sir, हाँ यस, sir, can you explain that graph once, please? ग्राफ, Yes, sir, I didn't got it. okay, so you have this kind of graph, right? Yes, sir. So there are many energy possible of beta particle, right? Okay, So sir. beta particle can have this much energy, it can have this mass, this mass, this mass, this mass, this mass. So spectrum is continuous. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा पार्टिकल का एनर्जी क्या है, इमिटेड बीटा पार्टिकल का मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिनो इमिट हो रहा है उसका एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी जो इमिटेड न्यूट्रिनो जो इमिट हो रहा है उसका एनर्जी कुछ भी पॉसिबल है, देयर आर मेनी एनर्जी पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम न्यूट्रिनो का एनर्जी है ना, Yes, यहाँ sir. पे न्यूट्रिनो का कुछ एनर्जी है तो बीटा पार्टिकल को कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका न्यूट्रिनो जो इमिटेड न्यूट्रिनो उसका एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और बीटा पार्टिकल का एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इमिटेड न्यूट्रिनो है ना उसका एनर्जी, देयर आर मेनी पॉसिबल एनर्जी, so that's why that emitted beta particle can have also many possible energy. Okay. So that's why that spectrum is continuous. Okay, sir. Thank you, sir. Now we'll discuss the Q value of beta decay. So first is beta minus. Okay. So for beta minus, ZA is converting to Y Z plus on A, then you'll have 0 and anti-neutral. Okay. So what will be the Q value? Q of beta minus. So I'll write in terms of atomic mass. What I can write? Atomic mass of ZA minus ZME. Okay. Then you will have atomic mass of Z plus on A minus Z plus on Me. Okay. Minus Me. And what I'm writing? The mass of parent. Okay. Mass of reactant minus mass of product. But I am writing in terms of atomic mass. So obviously I have to subtract this ZME, right? And the mass of product. In product you have Y. So mass of product. This should be atomic mass. Mass of product. Then mass of electron. You have to subtract. And mass of antineutrino is 0. Okay. So this will be cancelled. Is it clear now? Is it clear? ये इक्वेशन सबको क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है इक्वेशन? माइनस से माइनस ही सर एंटी न्यूट्रिनो का क्या लिया है, माइनस एम ही लिया है? नहीं, एंटी न्यूट्रिनो का मास अभी मैंने लिखा था 0। तो ये आपका देखो, आप क्या लिखते हो क्यू वैल्यू पे? प्लस होगा जेड प्लस 1 वाला सर।
हाँ Z+1 वाला प्लस होगा इसमें। हाँ ये प्लस होना है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर मास कैसे लिखते हो? न्यूक्लियर मास ऑफ दिस माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट में क्या है आपका, एक तो वाई है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और इसका मास तो 0 है, ठीक है। फिर अगर एटॉमिक मास में लिखना चाहता हो तो फिर आप क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ दिस माइनस ZMe। फिर आपका माइनस में आ जाएगा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में वाई है, तो एटॉमिक मास ऑफ दिस वाई माइनस माइनस प्लस Z प्लस ऑन Me, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव माइनस, सो इट विल बी प्लस Z Clear, plus on clear, Me. sir. So it will be now for Q minus Q beta minus, this should be 0, right? For beta decay, the energy release should be some positive number. So Yes. what is the condition? What you can say from here? The parent mass, atomic mass of parent should be greater than the atomic mass of daughter. Okay, so this is the condition for beta minus decay. Now can you write same thing for beta plus? कितना लिख लिया आप लोगों ने? Is it clear this equation? Yes. Yes sir. सबको क्लियर है? Is it clear to all? Is it clear? Yes sir. Shall I erase? Yes, sir. Okay. टाइम क्या है इस क्लास का? सर अभी है सर। नहीं, ब्रेक चाहिए ना आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, 5 मिनट्स का। हाँ ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं ना, ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। सर वीडियो को मत ये हाँ लिख रहे थे। ठीक है, ठीक। सर हो गया सर। Southern, can you hear me? Yes sir. You are asking that dipole 0, right? But in ground state it is 0, but when it is in excited state, na? Actually gamma particle, when it is emitting, that time it is in excited state. So that time you will get dipole contribution, dipole will oscillate. Okay. Okay. Yes sir.
Then shall I start? Yes, sir. Okay. Then you have beta plus decay. So again, parent nuclei will convert to daughter. Its atomic number will be Z minus 1, mass number will be same. We have 0 and I need to know. So again, if you calculate Q value, Q beta plus for beta plus decay, it will be M atomic mass of parent ZA minus ZME, okay, minus you have atomic mass of daughter Z minus 1 A, then you will have Z minus plus Z minus 1 ME, and of course you will have ME into C square. Okay. So this will give you MA ZA, okay, then MA Z minus 1 A, then so minus ZME, this plus ZME will be cancelled, so you will get minus twice ME C square.
Okay, so this Yes, ZME will cancel with plus ZME. So you have minus ME, that will be twice ME. Again for Q beta plus, it will be greater than 0. So what is the condition for beta plus decay? The atomic mass of parent should be greater than atomic mass of daughter plus twice the rest mass of electron. Okay, yes sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. So can I release remove? Shall I Yes, erase? लास्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर. Okay, so your parent nuclei will capture an electron from inner shell. Okay, and it will give daughter nuclei with the emission of electron neutrino. So again, for this process, that Q value will be how much? Atomic mass of parent, then you will have ZME plus ME minus atomic mass of daughter, okay, then plus Z minus 1 ME C square. Okay, so if you combine this, it will give you, this combination will give you minus Z minus 1 ME. Okay, and this will give you, this will be cancelled with this. Okay, yes sir. so we'll get basically atomic mass of parent minus atomic mass of daughter into C square. So Q E minus should be greater than 0. So it means this is the condition for electron capture. MA ZA should be greater than atomic mass of daughter. Okay. Now we'll discuss selection rule. लिख लिया इतना आप लोगों ने? Yes sir. Wait a second, sir. हाँ. Sir, Yes. can I ask you a simple question, sir? Yes. सर मतलब आता है बट थोड़ा सा ऐसा डाउट था सर, जैसे क्यू वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, राइट? Q value product माइनस रिएक्टेंट नहीं होता है, डिपेंड मतलब अपॉन दैट पैरामीटर. अगर Q वैल्यू, हाँ आज डिस्कस करेंगे एंड में. अगर मास के टर्म में लिखते हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिखते हो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट. ओके सर, तो सर जब हम लोग मास के टर्म्स में लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा ना सर? हाँ, तो यही तो हाँ सर, तो ये तो सही है, बट सर इसमें सर फिर जैसे MAZ को माइनस ZME क्यों, मतलब हाँ एक्चुअली ये देखो एटॉमिक मास में लिख रहे हो, एक्चुअली क्या है ये आपका न्यूक्लियर मास, जब लिखोगे न्यूक्लियर मास में होना चाहिए ना. तो अगर एटॉमिक मास में लिख रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इसमें
कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो आप, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो, तभी ये एटॉमिक मास बन रहा है न्यूक्लियर मास से। यस सर तो जेड नंबर इलेक्ट्रॉन को अगर इंक्लूड करो तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। जब इसको न्यूक्लियस से एटॉमिक मास में लिखोगे तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर रहे हो आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था ये एटॉमिक मास के फॉर्म में जब लिखोगे तो आपको माइनस एम करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। ओके सर थैंक यू सर। Shall I remove? Yes, sir. हो गया, okay. Now we'll discuss selection rule and that is very important for your exam point of view. So suppose same reaction I'm writing Z8 to Y Z plus on A plus electron minus is anti-neutron. So let us assume that spin of this parent is Ji, its parity is pi I. Okay. Spin means its total angular momentum. Okay. For this, let us assume Jf and parity is pi f, and let us combine these two. So this combination will give you, let us assume this is your J. Okay. So J will be how much basically? L plus S, right? Yes. Let us define small j. L plus S, right? So S will be how much for this combination? So for 0, 1. exactly 0, 1. exactly, so it will give you 0 1, right? 0 1. Okay. So now if L equals to 0, if L equals to 0, this is known as, this is called allowed transition. Allowed transition. Okay. If L equals to 1, this is known as first forbidden. फर्स्ट फॉरबिडन का मतलब ये नहीं कि फॉरबिडन है, ये नेमिंग है, ठीक है। ये अलाउड है बट लेस प्रोबेबल है, ठीक है। सर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सर। मतलब अभी हाँ देखूंगा, अभी आप थियोरेटिकली है, अभी प्रूव करूंगा कि कौन कौन सा अलाउड होगा, है ना, अभी प्रूव करेंगे ना थियोरेटिकली। तो L इक्वल्स टू 1 है तो उसको फर्स्ट फॉरबिडन नाम दिया गया है। फॉरबिडन का मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन ही फॉरबिडन है, ठीक है, बस जस्ट नेमिंग है। इफ दिस वन इज ऑब्जर्व, दिस वन इज ऑब्जर्व, दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबल, probability will be less here. Then you have L equals to 2. This will give you second forbidden transition. Okay. Okay. Similarly, you can define third forbidden, so on. Now, सर सर ये पूरा रिएक्शन का और ये लास्ट दो न्यूट्रिनो और हाँ एल जो है आपका लास्ट दोनों का, इसका जे जो डिफाइन किया ना इसका है इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो का, ठीक है। और इसका जे तो आपको पता है, ये तो आपका आप निकाल भी सकते हो, ये गिवन है, ठीक है। ओके हाँ सर हाँ सेकंड फॉरबिडन इज मोर लेस प्रोबेबल देन फर्स्ट एग्जैक्टली, हाँ हाँ यस। अभी प्रॉब्लम करूंगा फिर क्लियर हो जाएगा, पहले थोड़ा डिस्कस करने दो। ओके नाउ, सो फर्स्ट क्या क्या केस हो सकते हैं, आपका एस इक्वल्स टू 0 है नॉन, फिक्स हो गया यहाँ पे, है ना। एस इक्वल्स टू 0 है नॉन, इधर भी मैं लिखूंगा। तो फिर एल इक्वल्स टू क्या हो सकता है, पहले 0 हो सकता है, एस इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं ना, ठीक है ना। एल इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 0, तो जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर आपका रिएक्शन क्या था, जे आई इक्वल्स टू जे एफ प्लस जे, जे, है ना।
पैरिटी को कैसे लिखोगे? पाई आई, लेट अस अज्यूम दिस पैरिटी इज गिवन पाई आई पाई एफ, एंड इसका पैरिटी को पाई मानो, ठीक है। तो पाई आई इक्वल टू पाई एफ इंटू पाई, ठीक है। पाई कितना हो जाएगा? पाई किसका पैरिटी है? इन दोनों का कंबाइंड पैरिटी है। अगर इन दोनों का कंबाइंड एल 0 है तो क्या हो जाएगा? पाई +1 हो जाएगा, प्लस +1 हो जाएगा। यस सर। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा? पाई आई इक्वल टू पाई एफ, और यहाँ पे क्या होगा? जे आई इक्वल टू जे एफ हो जाएगा, क्योंकि आपका एल क्या है, सॉरी जे क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जे कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, अगर एल 0 है, एस 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे, देखो क्या है, जो पेरेंट और डॉटर का जो ये है जे सेम होना पड़ेगा, है ना। तो अगर इन दिस सिचुएशन द स्पिन ऑफ पेरेंट शुड बी इक्वल टू स्पिन ऑफ डॉटर, एंड देयर शुड नॉट बी चेंज इन पैरिटी। तो इसको क्या बोलते हैं आपका? अलाउड बाय अलाउड फर्मी ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। ट्रांजिशन, सर हाँ यहाँ हम पैरिटी लिखते टाइम -1 रेज टू एल किया है ना हमने? हाँ, -1 फॉर एल, और एल कितना है यहाँ पे? 0 है, तो -1 आना चाहिए ना पैरिटी। -1 की पावर 0 ऑन नहीं होता है ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो फर्स्ट अलाउड सॉरी अलाउड फर्मी ट्रांजिशन का ये क्या है? अलाउड फर्मी ट्रांजिशन का कंडीशन क्या है? अगर जे आई जे एफ बराबर होगा, अच्छे से सुनो, अगर जे पेरेंट का जो स्पिन है डॉटर का स्पिन के बराबर है और देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, देन दिस इज नोन एज अलाउड फर्मी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अलाउड फर्मी ट्रांजिशन का आपका कंडीशन पता चल गया ना, जे आई को जे एफ के बराबर होना पड़ेगा एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी। सेकंड कंडीशन क्या होगा? एल इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 1, है ना, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जे कितना हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, राइट, जे इक्वल्स टू ऑन हो जाएगा। फॉर दिस केस ऑल्सो यू सी एल इक्वल्स टू 0, so if l equals to 0, pi will be 0, pi will be even, so obviously for this case also pi I equals to pi f, so there is no change in parity. Now what about ji condition for ji and jf? So okay, now let us assume ji is 2, let us assume ji is 2, then what will be the value of jf? What will be the value of jf? कॉमन थ्रू 3। हाँ, यहाँ पे एक दो लाइन और मेंशन कर लो। यहाँ पे जो है फॉर दिस फर्स्ट अलाउड फर्मी ट्रांजिशन, यहाँ पे क्या है? डेल्टा जे, देयर इज नो चेंज इन स्पिन, ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन पैरिटी। मतलब जो मैंने बोला हूँ उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिखा हूँ यहाँ पे। so there is no change in spin between parent and daughter, and there is no change in parity also, so delta pi equals to 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है? जे अगर 2 है तो जे क्या क्या हो सकता है? वेक्टर सम करोगे ना, तो 1 + 2 से 1 - 2 तक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? 3 2 1, समझ में आया वाला लाइन? यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, जे बिकॉज टू क्या हो सकता है? It will be vector sum, so 1 + 2 2 1 - 2, 1 + 2 will give you 3 and 1 - 2 will give you 1, of course there will be mod, so from 3 to 1 all integer will be possible, 3 to 1. Now we see delta j, so delta j means 2 - 3, that will give you -1, 2 - 2 that will give you 0, and 2 - 1 that will be that will give you +1. So for this case, delta j will be how much? 0 ± 1, 0 ± 1, and delta pi will be how much? 0. Okay, so if there is change in spin, that is 0 ± 1, and there is no change in parity, this is known as what? This is known as allowed
Taylor transition. Taylor transition. Sir, Yes. sir, can you please explain once more that calculation of JF? JF, I'm telling you. Okay. Shall I erase this part? This part? Yes, sir. So JI is how much? 2. That is actually vector. Okay. And JF you don't know. And you have J, that is 1. So JF will be how much? 2 minus 1. So this is vector sum. Vector sum means this minus 1, minus doesn't mean that 2 minus 1. So this value can be mod of 2 plus 1, mod of 2 plus 1 to mod of 2 minus 1. वेक्टर सम ऐसे करते हैं, अगर प्लस हो तब भी हम करेंगे 2 plus 1 to 2 minus 1, अगर माइनस है तब भी हम ऐसे करेंगे. तो 2 plus 1 means 3, then 3 up to 2 minus 1 on. So 3 to 1 all possible integer. So 3 to 1. Is it clear now? समझ में आई? नहीं? हाँ सर. ओके. नाउ ये वाला 2 हो गया, फिर एक और करते हैं, फिर समराइज करेंगे. Now let us assume the case is like L equals to 1, S equals to 1. Okay. So J will be how much? Vector sum, right? So mod of L plus S to mod of L 0, 1, minus 2. S. 2, 1, 0. Exactly, 2, 1, 0, 0, 1, 2. Okay. Again, we can write Ji equals to Jf plus J. Okay. Now you see, pi I will be equals to minus pi F for this case. Because pi will be minus 1, right? Because no, Minus 1 to the power L. Yes, sir. minus 1 to the power L, Yes, sir. and L is on here, so that will give you minus 1. Okay. Now can you tell me that what will be the value of J? Now let us assume the Ji is 3. So what will be the value of Jf? What will be the value of Jf? Sir, 4 to 1. So it will be 3. हाँ नहीं, 4 अब to डिपेंड करेगा ये आपके इसके ऊपर. अगर 3 minus 0 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 3 आएगा, है ना? 1 अगर लोगे तो J, there are many J, right? 0, 1, 2. So if you take J equals to 0, so Jf will be 3 minus 0, right? If you take J equals to 1, then what will be the value? 4, 3, 2, right? 4, 3, 2, right? Yes, sir. Yes. Okay. So this is for J equals to 2. This is for J equals to 0. What about if you take J equals to 2? If you take J equals to 2, then 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, right? Yes, sir. 4, 3, 2, 1. So this is for J equals to, this is J equals to 1, J equals to 2. Okay. So what will be the change in J? You see, it can be 0, right? It can be 1, right? It can be 2. No? Yes, sir. See, this is Ji, so it can be 0. It can be 1, right? It can be 2. So change in J, that will be 0 plus minus 1 plus minus 2. And of course, there will be change in parity here, right? Parity should be changed here. So earlier there is no change in parity, or यहाँ पे delta pi not, you can say delta pi change in parity here, no. Here also no. Sir, Yes. sir, here Ji equals to Jf plus J and J is from 0, 1, 2. Then how Ji equals to 3? I have taken Ji. Let us assume Ji equals to this. Oh, Then, like, okay, sir. Likewise, then here also you have assumed Ji equals to 2. Let us assume Ji equals to 3. Then these are the possible values of Jf. So earlier there is no change in parity. So delta pi, please write that not 0. There will be no change in parity. In language that should not be like this. And here delta pi will be yes. Change in parity is yes.
Okay, is it clear? Yes, sir. Now I'll summarize that table. Shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. So first will be type of transition. Then L value. Then you will have Fermi transition. Fermi transition, okay. For Fermi transition, S equals to 0. Then you have Gamow-Taylor transition, GT transition. For GT transition, H equals to 1. Okay. हाँ सर, टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बाद आपने क्या लिखा है वहाँ पे? सर वो टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बाद क्या लिखा है? L value. ओके ओके, एल, यस सर. Then delta J, delta pi, delta J, delta pi. Okay. Now we'll discuss one by one. Suppose you have transition like 0 plus to 0 plus. So initial that parent nuclei has spin 0, parity positive. Daughter has spin 0, parity positive. So this kind of transition is known as super allowed. Super allowed. Okay. So here L value is 0. Now can you tell me what will be the delta J? 0. Exactly. 0 minus 0, right? So delta J will be 0. What will be the change in parity? No change. No change. No change. No change. Very good. But is this decay allowed? So this decay is allowed by Fermi-Taylor transition. There is no restriction in selection rule. But is this decay allowed by Gamow-Taylor transition? No, sir. Does not parity change. No, not a parity. You see, the angular momentum should be conserved. So Ji equals to Jf plus J plus J, right? Now you see L is 0. S is how much? 1. So J will be how much? 1, right? So Yes. is it clear? So L is 0, S is 1, so J obviously 1. So this value is 1. So what they have given? This they have given 0. So and J also given 0. So is this equation valid? 0 equals to 0 plus 1? No, right? So that's why this decay is not allowed by Gamow-Taylor transition. Is it clear? So super allowed transition is only allowed by Fermi transition. Is it clear? Huh? No? Yes sir. Now second is allowed transition. So allowed transition we have observed L equals to how much? 0, right? So only super allowed is possible when 0 plus to 0 plus. Okay. For allowed transition, if this is non-zero and L is 0 there, did you get what I am saying? अगर 0 प्लस इसमें 0 से 0 ट्रांजिशन है तभी आपका सुपर अलाउड बोला जाएगा. इसमें भी L 0 है, इसमें भी L 0 है, but only difference here 0 to 0 transition. I will come to the example also. Now for this case delta J will be how much that we have derived? Delta J obviously 0, right? Because L is 0, S is 0. So J will be how much? 0, right? Yes sir. J is 0, so Ji should be equals to Jf. So there is no change in J. Is it clear what I am saying? And of course here there will be no change in parity. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes sir. किसी का कोई डाउट है? हाँ. ये अलाउड वाला ये कोई अलग ट्रांजैक्शन है या इसी की बात कर रहे हैं? अलाउड वाला? हाँ जी सर. अलाउड के लिए मैंने क्या लिखा था? L equals to 0 लिखा था, है ना? अगर if you remember, ऊपर डिस्कस करा ना. हाँ? अभी ऊपर जो डिस्कस करा वो यही तो है सुपर. हाँ, बट यहाँ पे एक से देखो, यहाँ पे क्या है अलग.
ये रेस्ट्रिक्शन इसका यही है कि 0 से 0 जब हो तभी है। सपोज मान लो आपका ऐसे सिचुएशन आ रहा है कि 1/2 से 1/2 प्लस से 1/2 प्लस हो रहा है ना, तो ये आपका इसको सुपर अलाउड नहीं बोलोगे, ये आपका अलाउड होगा, सुपर अलाउड नहीं है ये, ठीक है। तो जब भी 0+ से 0+ ट्रांजिशन होगा उसको हम सुपर अलाउड बोलेंगे। अभी एग्जांपल में आऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका, हर एक का एग्जांपल दूंगा मैं। इतना क्लियर है सबको? अब इसमें बताओ कि डेल्टा जे कितना होगा, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। तो इफ L equals to 0, S equals to 1, then J will be how much? 1, right? हाँ, is it clear? हाँ, प्लस माइनस 0 plus minus 1. 0 plus minus 1, and of course there is no change in parity. Okay, then next L equals to 1. This is known as first forbidden. मतलब सर ये अलाउड ट्रांजिशन जो है वो फॉर्मली ट्रांजिशन भी हो सकता है, जीटी ट्रांजिशन। एग्जैक्टली दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए कितना होगा, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए L इक्वल्स टू कितना है, 1 है। यहाँ पे आपका जो आपका डेल्टा जे होता है प्लस माइनस ऑन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरिटी का चेंज होगा, यस सर, पैरिटी चेंज हो जाएगा, राइट, यस। यहाँ पे कितना होगा आपका डेल्टा जे, अभी किया था हम लोगों ने L इक्वल्स टू 1, S इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या था आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी पैरिटी आपका चेंज हो जाएगा। देन यू हैव सेकंड फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, और सेकंड फॉरबिडन L इक्वल्स टू हाउ मच 2, यहाँ पे जो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2, ठीक है। L इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस 2, यहाँ पे नो चेंज इन पैरिटी, और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस नो माइनस 3। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ओके ओके सर। नेक्स्ट थर्ड फॉरबिडन, ओके, L इक्वल्स टू 3, डेल्टा जे विल बी प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी बुक में मिस्टेक होता है, मतलब बहुत सारे टीचर में भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आपका प्लस माइनस ऑन लेते हैं, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस 2 लेते हैं, एक्चुअली नहीं होगा। देखो यहाँ का अगर प्लस माइनस ऑन लोगे, सपोज मान लो यू आर टेकिंग प्लस माइनस ऑन, सो प्लस माइनस ऑन मीन्स देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, राइट। इफ यू आर टेकिंग प्लस माइनस ऑन हियर, देयर इज नो चेंज इन पैरिटी। यहाँ पे भी प्लस माइनस ऑन, देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबल एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज देयर हेयर L इज 0, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस ऑन है डेल्टा जे फॉर GT ट्रांजिशन, एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, राइट। अगर यहाँ पे भी प्लस माइनस कभी कभी लेते हैं, टीचर भी लेते हैं, प्लस माइनस ऑन लोगे, देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, बट फॉर दिस corresponding to allowed transition, right, and this corresponds to second forbidden, so obviously this one is most probable as compared to this. तो पैरिटी तो एल पे डिपेंड कर रहा है ना सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, प्लस माइनस ऑन को भी कंसिडर करते हैं, बट ये नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ऑन, देखो प्लस माइनस ऑन यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, यहाँ पे भी देयर इज नो चेंज इन पैरिटी। बट अब बताओ कि ये वाला ज्यादा प्रोबेबल है या ये वाला ज्यादा प्रोबेबल है? Obviously this one, because for this case you see this is allowed, so this is more probable as compared to this, because here this is second forbidden. So ये यहाँ पे आपका क्या होगा, if L equals to 2, so for Fermi transition delta J will be only plus minus 2. If L equals to 3, for Fermi transition only delta J will be plus minus 3. And of course for third forbidden there is a change in parity for Fermi transition. सर पहले वाले में और एक सर प्लस माइनस 1 नहीं हो वो डेल जे में? हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं सर, सेकंड का डेल जे यहाँ पे नहीं सर, सेकंड फॉरबिडन का जो डेल जे है, सेकंड फॉरबिडन का जो जीटी में डेल जे यहाँ पे, हाँ? यहाँ पे नहीं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 1 कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे आप बोलो प्लस माइनस 1, हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस 1,
2 माइनस 1 देखो यहाँ पे अगर प्लस माइनस ऑन करोगे, आप बोल रहे हो प्लस माइनस ऑन ना, तो प्लस माइनस ऑन एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, राइट? आप यहाँ पे बोल रहे हो आप प्लस माइनस ऑन एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, राइट? ये तो बोल रहे हो ना? ओके ओके तो ये वाला देखो मोर प्रोबेबल होगा। तो हमेशा हम ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है? जो मैंने लिखा हूँ इसको आप ऐसे लिखो, मैंने बहुत रिसर्च करके लिखा हूँ उसको, ठीक है? तो हम हमेशा ऊपर से चेक करेंगे, ठीक है? ये करेक्ट है। फिर आपका ये का क्या है, +-3 +-4 एंड देयर इज बी चेंज इन पैरिटी, ठीक है? ये अभी करो, मैं अभी प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को। इट क्लियर? यस सर। यस सर। रिमूव कर सकते हो इसको, चलो इरेज। यस सर। सबका हो गया? सर। नहीं? यस सर। सर गामा टेलर ट्रांजिशन में हमेशा हम लोग JI = 2 एज्यूम करेंगे? नहीं, वो तो आपका चॉइस है, वो कुछ भी ले सकते हो, बट डेल्टा जे की बात होगा हमेशा, है ना? डेल्टा जे का क्या चेंज है, डेल्टा जे का चेंज एंड चेंज इन पैरिटी, दैट विल डिसाइड यू व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिशन इट इज। जैसे लास्ट वाले केस में डेल्टा जे +-3 वो मैंने एग्जांपल दिया था कि डेल्टा जे का चेंज किस तरह से हो सकता है, वो जस्ट एग्जांपल के लिए। दैट कैन बी एनीथिंग, लेट मी गिव फ्यू एग्जांपल्स, देन इट विल बी क्लियर टू यू। मुझे लगा कैलकुलेट करा। नहीं, वो तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि लेट अस अज्यूम ji इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट विल बी द डेल्टा जे। नाउ प्रॉब्लम करो एक आप लोग। सपोज मान लो आपका कार्बन 610 0+2, बोरोन 510 0+, ये बताओ कौन सा होगा ये? सुपर अलाउड। Of course it will be super allowed, right? Now let us take another example. Helium 0+2, lithium, helium 2,4, lithium 3,6, okay, 1+. अलाउड अलाउड है, GT से होगा। Good, very good. So delta J will be how much? Just इसका डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, and there is no change in parity. So delta J equals to 1 and there is no change in parity. कौन सा था? पैरिटी का चेंज नहीं है, डेल्टा जे इज ऑन। यस सर। टेक योर, so this is allowed by GT. Next, let us take example boron 513, okay, 3/2 minus carbon 613 1/2 minus, इसका बताओ क्या होगा? हमेशा माइनस करके लेना, जो वाला टर्म होगा डेल्टा जे वही लेना, क्योंकि प्लस करके लोगे तो डेल्टा जे बड़ा आएगा, वो नीचे आएगा। तो हमेशा मेरा सलाह ये है कि इनका जो माइनस वाला टर्म है वो डेल्टा जे। 1 आ रहा है सर। गुड। सो डेल्टा जे इक्वल्स टू हाउ मच? ऑन आ रहा है, डेल्टा जे इक्वल्स टू ऑन एंड देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, अलाउड बाय जीटी, राइट? सर आपने वो क्या बताया -10? देखो मैं बोल रहा हूँ डेल्टा जे हमेशा आप ये लेना, इनका सब मॉड ऑफ ji माइनस जेएफ लेना, क्योंकि ji प्लस जेएफ लोगे तो डेल्टा जे हमेशा देखो नीचे की तरफ जाओगे तो फिर क्या होगा, प्लस माइनस देखो बढ़ता जाएगा, है ना? तो डेल्टा जे को आप, मेरा शॉर्टकट यही है, आप चेक भी कर सकते हो, जस्ट इसका मॉड्यूलस, इसका जो ji माइनस जेएफ का जो चेंज है इसका मॉड्यूलस ले लोगे, वही आपका डेल्टा जे है। क्योंकि आप एक्चुअली वेक्टर सम करोगे ना, तो वेक्टर सम करके आपको डेल्टा जे बहुत सारे पॉसिबल मिलेगा, बट लिस्ट कौन सा मिलेगा? ये वाला मिलेगा। यस सर। हाँ
इसमें सर, L 0 कैसे हो रहा है सर? हाँ L 0 कैसे हो रहा है सर इसमें? कौन सा? सर एल तो डेल्टा 1 G तो पता चल गया, L तो 1 आ रहा है सर इसमें। डेल्टा जे? एल एल सर एल डेल्टा G तो 1 है, L सर L तो 1 आ रहा है सर। एल कहाँ है? सर सर 3 डेल बाई 2 से नहीं निकले तो एल का L वैल्यू है। बोल रहे हो ना? एल? यस एल सर, का वैल्यू सर। दिस वन यू आर सेइंग ना? यस सर। यस सर, L तो 1 आ रहा है सर। कहाँ है एल? सर 3 बाई 2 यानी 1 प्लस हाफ एंड दे, हाफ। देखो जी, ये आपका जे आई है, ये आपका जे एफ है। यस सर। हमें एल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम जस्ट डेल्टा जे को चेक करेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ, ये आपका जे आई है, जे एफ है, ठीक है? सर हाँ यस। आपने जो हिंट बताई थी ना, उसमें मॉडुलस लेते टाइम 3 मतलब जो नंबर है वही लेना है ना, मतलब हाँ, माइनस। जस्ट इसका दोनों का सब्सट्रैक्ट करके जो मिलेगा वही ले लो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? डेल्टा जे को वन मिलेगा, है ना? 1 मिलेगा। हाँ ठीक है। अब एक और करो, इसका करो आप, न्यूट्रॉन 1/2 टू प्रोटॉन 1/2, इसमें बताओ। सर अलाउड बाय जीटी हाँ, तो इसमें डेल्टा जे कितना है? 0 डेल्टा जे कितना है? 0 जीरो है, नो चेंज। और नो चेंज इन पैरिटी। अलाउड बाई फर्मी एज वेल एज जीटी। फर्मी सर, फर्मी। फर्मी जीटी दोनों, उसमें जीटी में भी तो 0 प्लस माइनस ऑन था ना? नहीं? सर फर्मी होगा ना जीटी में, जीटी के 0 तो आया सर। हाँ देखो, रिमेंबर करो, देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, डेल्टा जे 0 फॉर फर्मी यस सर। एंड डेल्टा जे 0 प्लस माइनस ऑन फॉर जीटी। तो जीटी के लिए डेल्टा जे 0 भी है, प्लस माइनस ऑन भी है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों दोनों में होगा ना ये? नहीं? सर टेबल, +1 और -1 नहीं है ना, तो जीटी में कैसे आएगा? ओ माय गॉड, ये देखो, ये लिखा था ना, डेल्टा जे इक्वल टू 0, आइदर 0 और प्लस माइनस ऑन। अगर हाँ, 0 either। है, हाँ तो 0 हाँ ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है ना? हाँ सर, क्लियर क्लियर। है ना? सर डेल्टा से 0 के लिए फर्मी होगा और 1 के लिए जीटी से होगा। नहीं, अगर सपोज मान लो ये लिखा था ना, डेल्टा जे 0 फॉर फार्मी एंड फॉर डेल्टा जे 0 प्लस माइनस ऑन फॉर जीटी, राइट? तो डेल्टा जे अगर 0 है तब भी वो अलाउड है जीटी के थ्रू। अगर देयर इज नो चेंज इन पैरिटी, तो डेल्टा जे अगर 0 है तो अलाउड है बाय जीटी, और डेल्टा जे 0 है वो भी अलाउड है फार्मी के थ्रू। तो ये अगर यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपका डेल्टा जे 0 मिल रहा है, तो ये आपका फार्मी के थ्रू भी अलाउड है, जीटी के थ्रू भी अलाउड है, बिकॉज बोथ रूल इज सेटिस्फाइंग देयर, ठीक है ना? सर लेकिन डेल्टा जे प्लस और -1 होगा, एक तो वो साथ दोनों सिर्फ पॉसिबल है, एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं ना। कोई भी अलग केस के लिए वो हाँ, सिर्फ अगर जाएगा। देखो, हमेशा मैं यही बोल रहा हूँ, है ना, इनमें से कंजर्वेशन पहले मैं भी बताया था, जब न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मैंने बोला था ना, काफी सारे पॉसिबल है आपका, उनमें से अगर एक भी मैच कर रहा है तो वो अलाउड है ना? तो 0 तो अलाउड मैच हो रहा है ना, तो ये अलाउड है। दिस इज अलाउड बाय जीटी एज वेल एज फर्मी। ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटी मतलब केस मिलेगा जहाँ पे दोनों दोनों के थ्रू अलाउड है वो, ठीक है? ये एक सर एग्जांपल है। हाँ सर जीटी और फर्मी में ज्यादा प्रोबेबल क्या होगा? जीटी फर्मी ये तो मेरे को पता नहीं, मतलब दोनों प्रोबेबल तो मैंने बुक में देखा नहीं कभी, सर बट S=0 S=1 से फर्क नहीं पड़ेगा हाँ फर्मी के लिए? हाँ, कैसे? वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू आप वही फंक्शन लिख के ये कर सकते हो, बट ऐसे आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है, आपको ये नहीं सर, पूछा। उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो अगर उन दोनों में जो ज्यादा प्रोबेबल है। नहीं, ये से कभी बुक में तो नहीं लिखा है, बट हाँ, ये दोनों आपका ये जो रूल है डेल्टा जे 0 दोनों में है, तो ऑब्वियसली दिस इज अलाउड बाय बोथ फर्मी एंड जीटी रूल। ओके, बुक में कभी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सा लेस प्रोबेबल है, ठीक है? बट आई थिंक इट विल बी मोस्ट प्रोबेबल बाय फर्मी, बट आई एम नॉट श्योर। यस सर। ओके, ठीक है? ऐसे कई सारे केस अभी एग्जाम्पल में आ जाएगा जब आपका अलाउड बाय बोथ केस, ठीक है? एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन 717 1/2 minus
to oxygen 817 5/2 प्लस, इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा? डेल्टा जे कितना है? सब 2 राइट? 2 हाँ, प्लस माइनस फर्स्ट फॉरबिडन प्लस माइनस 2 and change in Everything parity. changes, sir. So this will be what? Gamma first forbidden. Good. So first forbidden GT. First forbidden, okay. ठीक है, एक और एग्जांपल लो. सपोज यू हैव, हाँ सर इसमें प्लस इसी में माइनस अगर नहीं है। पैरिटी चेंज इसी में अगर पैरिटी चेंज नहीं होता हाँ तो ये सेकंड फॉरबिडन हो जाता ना, हाँ, सेकंड फोरबिडन, इसमें पैरिटी चेंज है ना. फर्मी वाला. हाँ. ओके सर. यहाँ पे आपका क्या है? सपोज मान लो आपका ब्रोमीन है 3576. ओके, इसका स्पिन जो है ऑन माइनस है, यहाँ से आपका बन क्या रहा है AC34 76 0 प्लस. ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ? ये भी क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा जे कितना आ रहा है? फॉरबिडन अलाउड बाय फर्मी. देखो डेल्टा जे ऑन है ना, देयर इज ए चेंज इन पैरिटी. अब देयर इज ए चेंज इन पैरिटी डेल्टा जे ऑन, तो आपका डेल्टा जे ऑन चेंज इन पैरिटी फर्मी में भी था और जीटी में भी था. जीटी में भी है ना. फर्स्ट फॉरबिडन. हाँ, तो फर्स्ट फॉरबिडन बाय फर्मी एंड जीटी बोथ. नहीं Yes, sir. टेबल में, हाँ, फर्स्ट फॉरबिडन फर्मी फर्मी प्लस जीटी. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ सर इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस 3 नहीं आएगा, डेल्टा जे भी आएगा ना. हाँ, अब देखो 3 में जाओगे तो नीचे चला जाएगा ना, उसीलिए मैं सौतन पूछ रहा था उस टाइम बताया. 3 में जाओगे नीचे चला जाएगा ना, बट ऊपर वाला मोस्ट प्रोबेबल है, ऊपर से चेक करना पड़ेगा आपको. बेस्ट ये है कि इनका सब्सट्रैक्ट करो, जो लिस्ट मिलेगा वही है आपका. मैंने बोला था ना, ऊपर से जैसे आपका प्लस माइनस 3 लोगे तो आपका एल इक्वल्स 2 में आ गया ना वो. यस सर. एल इक्वल्स 2 दैट इज लेस प्रोबेबल, तो हम ऊपर से काउंट करेंगे, ऊपर में जो है उसी को काउंट करेंगे. ठीक है, सौतन अभी पूछा था उसे, मैं उस टाइम बताया था आपको. क्या मैं से क्या माइनस करूं? जस्ट मॉड ऑफ दिस माइनस दिस, वही डेल्टा जे है. मॉड ऑफ इसका माइनस इसका करोगे तो कितना मिलेगा? 4/2 ही मिलेगा ना, वही है वो. ठीक है, ये फर्मी जीटी दोनों है ना सर? हाँ फर्मी जीटी दोनों. ओके सर. रूल सेटिस्फाइड हो रहा है तो दोनों है ना. मोस्ट प्रोबेबल लिस्ट प्रोबेबल वो तो बुक में डिसाइड ये नहीं मेंशन नहीं किया. ठीक है, जो रूल है वही मैं बता रहा हूँ आपको. अगर रूल सेटिस्फाइड है तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, सपोज यू हैव सोडियम 1122, इस spin is 3 plus, then neon 1022, spin is 0 plus. इसका बताओ डेल्टा जे कितना है इसका? 3 है. ठीक है, नो चेंज इन पैरिटी. सर थर्ड होगा. सेकंड फॉरबिडन बाय जीटी. गुड. सेकंड फॉरबिडन बाय जीटी. एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, लास्ट एग्जांपल इज RB37 और 87 P/2 minus, then you have SR 38 87, sorry, 9/2 plus. This is 9. Shall I erase?
हो गया आप Yes, लोगों का? ये वाला बताओ। third forbidden by Fermi. सर थर्ड फोर्बिडन बाय जीटी। यस सर, थर्ड फॉरबिडन बाय जीटी। डेल्टा जे कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है, राइट? आल्सो फर्मी सर। 3 और Both. चेंज, पैरिटी चेंज हो रहा है। अलाउड एंड जीटी थर्ड फॉरबिडन दोनों आएगा। हाँ, ये आपका क्या है? थर्ड फॉरबिडन, राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ये रूल। यस सर। यस सर। ठीक है सर बट इसको रिमेम्बर कैसे करें? ये रिमेम्बर, अभी एग्जाम के पहले ऐसा लगता है, एग्जाम में अगर आप मेहनत करोगे ना, एग्जाम में सारी चीज याद आ जाता है ना। Yes. हाँ, ज्यादा सोचो मत, यू हैव एनफ ब्रेन, सारी चीज जानते हो। ओके, इसका एक बार पैरिटी चेंज बता दीजिए। कौन सा? देखो ये 3/2 माइनस है, प्लस है, पैरिटी चेंज हो रहा है ना। यस सर, यस सर। ठीक है सर थोड़ा ऐसे देखना +1 माइनस हाँ, ये आपका पैरिटी, अगर पैरिटी चेंज है तो फिर वो देखना पड़ेगा, ऐसे दिखता है। ठीक है, उसको स्टॉप हियर, मैं और थोड़ा सोच रहा था बट टाइम हो गया। ठीक है, ओके सर।